saw my hotel as in North Goa, the best place to stay where you can see the sea because sea ही है जिसके लिए लोग गोवा आते हैं. And now it's daytime, so I can finally show you what the hotel looks like and see the hotel, and let's head for lunch. मुझको तो ब्रेकफास्ट खाने की आदत वैसे भी नहीं है, एंड आई डोंट नो गोवा में कौन वो लोग हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए उठते हैं. सो इट्स लेट आफ्टरनून एंड वी आर हेडिंग आउट फॉर लंच राइट नाउ. 90 का हो गया पेट्रोल. No onion. Red chili, chipotle, barbecue and mayonnaise. अगर आप सोच रहे हो गोवा में सबवे क्यों खा रहे हैं, बिकॉज एक तो ऑलरेडी लंच के लिए बहुत लेट हो गया है, एंड सेकेंड इट्स टू हॉट राइट नाउ टू ईट एनीथिंग एल्स. सबवे कभी भी डेट पर सबवे नहीं जाना चाहिए. अच्छी हुआ है कहाँ से शुरू करना है ना, वही एक जिसको जहर एडवाइस है. ये ऐसे मुंह खोलना पड़ता है पहले तो. Eating a subway is always messy. आप कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका मुंह हमेशा बिजी रहेगा चबाने में, खाने में. There is no decent way to eat a subway. इसलिए कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. लड़का बाहर बिना बिल भरे गुम हो जाएगा. So after the full-on messy lunch in Subway, now it's time to head to a new destination. मैं भी इस जगह कभी नहीं गई हूँ. ये है कोको बीच. आप और मैं साथ में करेंगे एक्सप्लोर.
वो सबसे पुराना ये सबसे हजारों में। पर उधर भगवान नहीं है ना, वही मेन, वही ये है ना, वही चौक है ना, वही मेन तक 5 पत्थर है। ये बहुत पुराना मंदिर सबसे का पुराना है गोवा का? सबसे नेरुल का, नेहरू का, सबसे पुराना है। और इधर क्या हम लोग इधर अभी ये डालता हम लोग ऊपर इसको सोने का, हम लोग उसको ये होता है फंक्शन होता है और सोने का तीसरी बनाता है, तीसरी बोलते हैं। और बाद में कुछ मीठा भी बना के सब लोग खाता है और सोने में इसमें डालता है पानी में। बाद में दूसरे दिन लोग वो तीसरी निकालता है, अपना पेट पालता है गोवा का। नहीं बट वहाँ देखा मैंने एकदम अलग से सिर्फ 5 पत्थर है वही मेन है, वही मेन हमेशा से सिर्फ हमेशा से पूजा होती है। बहुत ये जब मंदिर हुआ ना तभी हमारा नेहरू का सब इसके बाद मंदिर हुआ। ये बहुत पुराना है। तो इनको दादेश्वर क्यों कहा जाता है? वो राखंडर है हमारा। लेकिन नाम का कोई नाम ही उसका दादेश्वर। तो मालूम आपको याद नहीं होगा। बहुत पुराना है, सबसे पुराना। अच्छा, यहाँ पूजा की क्या प्रथा है? मतलब कोई पुजारी बैठते हैं? नहीं, कितने बजे खुलता है? हमेशा खुला? हमेशा खुला रहता है। खाली इधर सुबह सुबह पुजारी आता है इधर, पूजा करके जाता है। तो महाशिवरात्रि बड़ा होता है इधर, महाशिवरात्रि। नहीं, और दादेश्वर भगवान का वो 2 फंक्शन होता है इधर। एक मई तारीख को होता है और इसके पहले होता है। हम लोग बोला ना सोने का तीसरी बनाना डालता है वो। उसके बाद पहला लोग हमारे गांव में जब लोग शादी किया ना तो तीसरी के वजह से शादी किया। वो निकाल के उसका बीवी बेचता था, अपने बच्चों को घर बांधा है। बहुत इधर स्टोरी है। तो ये है नेहरू जिसकी कहानी आपने अभी अभी सुनी। यहाँ पर दादेश्वर भगवान का मंदिर है, यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर है। दादेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है। आई जस्ट शोड यू द मंदिर। तो आप कभी भी गोवा आए तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करिएगा। नाउ द सन इज़ ऑलरेडी सेट एज यू कैन सी, बट वी स्टिल गोना हेड टू कोको बीच एंड लेट्स सी वहाँ पर कुछ शैक्स हैं मज़ेदार कि नहीं। लेट्स गो। बीच काफ़ी सैड था, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट खुला है और लोग ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है। सो द प्लान इज नाउ टू गो टू कलंगूट एंड सिट एट सम शैक ओवर देयर। सो चलिए। बीच में अगर आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, चिल आउट करना है, आसपास लोग भी चाहिए, तो अनलाइक कोको बीच जहाँ लोग बिल्कुल नहीं थे, we had to come back here and we are just gonna relax here now. After relaxing for almost 3 hours, I think it's finally time यहाँ से निकला जाए और डिनर पे जाया जाए। One of my favorite places in Goa. I'm heading to Infanteria for dinner. Infanteria is largely popular for breakfast because they have their own bakery and you get amazing baked delicacies in the morning at 7:30. It opens up, but like I said, I am not a breakfast person, so I'm here for dinner. And the food here, also apart from the breakfast, is amazing. And just like Britos, the dessert is something to die for. So first dinner and then dessert.
Bon appetit. I can only recommend pasta over here because that's what I've had always, and they are too good. सिर्फ 2 चम्मच बहुत नाइंसाफी है. So this is cappuccino moussard. It's too yum to be described in words. Like I said, apart from the desserts, this place also rocks live music. हर दिन एक नया Goan artist यहाँ perform करता है. So whenever in Goa, not to miss, do come to Infanteria. And I guess this is it for my day 2 vlog. I hope you guys enjoyed. If you like, a big thumbs up. अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe right now because one more day of Goa Masti coming your way tomorrow.